Hey guys, welcome to yet another unboxing video, and this time, as you can see, we have the OnePlus Nord. Look at the packaging. It's quite different from the other OnePlus boxes that you usually get for its phones. They're big, they're large, and in fact quite long, but this one is compact and it's done differently as well. There's a nice blue and black color as part of the packaging. Let's unbox and see what's inside. So here we have the user manual. This is the phone this way, not as is written on the packaging. Yes, this is how the phone looks like. The display is quite bright. Of course, the touchpad is pretty smooth and very quick. The buttons, the power button and of course the volume buttons are this side. This is the power button, and of course if you want to put this on silent or you want it on ringer, these all are within the reach of your fingers. And look at this, how it fits in my palm. It's pretty snugly fit. Look at the back. In fact, it's a cool blue color. Really different from what OnePlus has usually done with its phones. Most of them usually come in dark tones, but this one is a really nice soothing powder blue. What else do you get in the box? Then of course there's a charger as well, the USB cable, and let me show you, this is the warp charger. Meanwhile, let's see what's in this box. So you get some, of course this is a welcome letter from Nord, and of course you get a phone cover as well, which is really great, so you don't have to go and hunt for a cover or you have to order a cover separately for yourself. And of course some booklets in here, some from OnePlus. Look at the packaging. It's really nicely done. It's slick and very edgy looking packaging. And there's a quick start guide, safety information guide, then you have a membership card as well that you've been given. Let's first go through the quick start guide. Guys, before you actually use your phone, it's very important that you quickly dive straight into the details that are given in this quick start guide. So it tells you all about how to use your phone. If you've never used a OnePlus model, this will actually help you how to use your phone. You must go through these two guides, the quick start guide and the safety information guide. So this is all that you get as part of the OnePlus packaging. And yes, of course, there is a SIM card ejector pin as well that's given in here. So this is all that you get as part of the OnePlus unboxing. Presenting Samsung Galaxy M51. This smartphone is available in celestial black and electric blue color variants. You can choose from two memory variants of 6GB of RAM with 128GB of internal memory and 8GB of RAM with 128GB of internal memory. The internal memory is expandable up to 512GB. The smartphone supports dual nano SIM with 4G network on dual standby and dual VoLTE. The 6.7-inch Super AMOLED Infinity O display with FHD plus capacitive touchscreen, 1080 by 2400 pixels resolution and 394 ppi gives you an immersive viewing experience. This Samsung smartphone also features fast face unlock, GPS, music player, video player, accelerometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, RGB light sensor, proximity sensor and email. This Samsung smartphone has a 64-megapixel main camera along with a 12-megapixel ultra-wide camera, a 5-megapixel depth camera and a 5-megapixel macro camera in the back. It also features a 32-megapixel front camera. The smartphone is powered by Android version 10.0 operating system with 1.8 GHz and 2.2 GHz Qualcomm with SD730G octa-core processor, ensuring a smooth performance. This smartphone runs on a 7000 mAh lithium-ion battery. The box includes handset with non-removable battery, travel adapter, USB Type-C to C, ejection pin and user manual. This product comes with standard brand warranty. For EMI options, refer to product detail page. Pay online using debit or credit card and net banking. For further information, visit the product detail page.
अब सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो आपको बता दूं कि इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिस पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिल जाती है। सेंटर में आपको ये छोटा सा पंच होल मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है ये, और डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बेजलेस डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। चिन भी एकदम ना के बराबर है, ज़रा सा चिन इसमें आपको मिलता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की लुक्स काफ़ी अच्छी है। अगर हम फ़ोन की लुक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दूं कि पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन का बना हुआ है, और बैक पैनल पर भी पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाती है। हालांकि ये जो कलर है थोड़ा ब्लैकिश ब्लूइश शेड का आता है, तो देखने में काफ़ी अच्छा होता है, शाइनिंग है। लेकिन यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट कंपनी ने दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंपनी एक इस बार एटलीस्ट ग्लास बैक पैनल वाला फ़ोन दे दे, थोड़ा सा अच्छा होता। तो यहाँ थोड़ी सी कमी पड़ गई कि कंपनी ने पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन दे दी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस प्रेजेंट में आजकल सभी स्मार्टफोन ग्लास दे रहे हैं, लेकिन कंपनी ने पॉलीकार्बोनेट देना ही सही समझा। पर एनीवे नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद करेंगे कंपनी आपको ग्लास बैक पैनल मुहैया करवाए। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, एक माइक है। इस तरफ आपको दिख जाएगा पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर की। पावर बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं एक माइक है। अब आप कहेंगे कि यार डिस्प्ले के अंदर क्यों नहीं है यार, ये तो खराब बात है। पर अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मैं खुद हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि यार डिस्प्ले में नहीं होना चाहिए, अच्छे से काम नहीं करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि डिस्प्ले में होना चाहिए। तो आप अपनी राय मुझे खुल के बताएं कि आप डिस्प्ले के अंदर पावर बटन चाहते हैं या फिर फिजिकल पावर बटन चाहते हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि फिजिकल होगा तो जल्दी फ़ोन अनलॉक होगा। डिस्प्ले के अंदर जो तो थोड़ा सा हल्का सा स्लो होता है कंपैरेटिवली। और यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं कि आपको सिम ट्रे मिल जाती है। तो ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छी है, बस एक कमी लगी कि बैक पैनल पर ग्लास नहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप बता दूँ कि इसमें आपको मिलता है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट, और हमारे पास जो वेरिएंट आया है वो 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट। इसमें मेमोरी बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको इसमें मिल जाता है, तो सेकेंडरी सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब रही बात परफॉर्मेंस की, तो 730G चिपसेट है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इससे मिल जाएगी। बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। एंट्रोडू स्कोर एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन पे मैं एंट्रोडू स्कोर लगा देता हूँ, तो आप एंट्रोडू स्कोर पर नजर डाल लीजिए। तो परफॉर्मेंस सेक्शन में आपने एंट्रोडू स्कोर देख लिया, लेकिन बैटरी कैसी है वो जानना जरूरी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री फर्स्ट 7000 mAh बैटरी इसमें आपको मिलती है। तो चलिए एक बार इसकी बैटरी का एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये फ़ोन अभी अभी मेरे पास आया है, तो मैं इसको फुल ड्रेन करके पूरा चार्ज तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको 10 मिनट का चार्जिंग टेस्ट दिखाता हूँ। देखते हैं कि 10 मिनट में कितनी चार्ज होती है इसकी बैटरी। तो अभी आप देख सकते हैं कि 57% बैटरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1838 हो रखा है। 10 मिनट की चार्जिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि 10 मिनट में कितना चार्ज होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 मिनट की मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन अभी अभी मेरे पास आया है, इसलिए इसको ड्रेन करके फुल चार्ज करने का फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है। ये क्विक ओवरव्यू है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत जल्द फुल चार्जिंग का सेटअप भी करूँगा मैं, वो आपको दिखाऊँगा, गेमिंग टेस्ट भी करूँगा, सब डिटेल में दिखाऊँगा। पर अभी क्विक ओवरव्यू देख रहे हैं कि 10 मिनट में कितना चार्ज होता है। तो 1838 पे चार्जिंग में लगाया था मैंने, और 57% बैटरी थी, 1839 हो चुके हैं। 10 मिनट वेट करते हैं, यानी 1848 तक वेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी बैटरी चार्ज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1848 हो चुके हैं, और यहाँ से चार्जिंग को निकाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी चार्ज हुई है। 65% बैटरी चार्ज हो गई है। 57 पे हमने स्टार्ट किया था और 65 हो गई। 10 मिनट में आप देख सकते हैं कि ये लगभग 8% चार्ज हो गई है बैटरी। 57 थी और अब 65 हो गई है। तो 10 मिनट में 8% बैटरी चार्ज है। तो मुझे लगता है कि चार्जिंग स्पीड लगभग 2 घंटे के आसपास होनी चाहिए। 100 मिनट में 100% तो नहीं होगी, 2 घंटे के आसपास लग जाएगा फुल चार्ज होने में। पर फुल चार्ज कितनी होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और इसका प्रॉपर एक फुल चार्ज टेस्ट करूंगा और वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पर अभी के लिए आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में 8% बैटरी चार्ज हुई है। तो आपने देखा कि 10 मिनट में 8% चार्ज हो चुकी है बैटरी। लेकिन अब कैमरा सेक्शन पे गौर करते हैं। कैमरा इस फोन में वही मिलता है जो आप सैमसंग गैलेक्सी M31s में देख चुके हैं, यानी 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है, वहीं 32 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर इसमें आपको मिल जाता है। अब क्योंकि 730G चिपसेट है, M31s में दूसरा प्रोसेसर था, इसमें दूसरा प्रोसेसर है, तो कैमरा क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर जरूर होगा। ये कैसे जाने कि कैमरा किसका बेटर है, उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें M31s के साथ इसे कंपेयर करूंगा। पर अभी आप फिलहाल इससे कुछ कैमरा सैंपल्स को नजर डाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कैमरा इसका काफी बेहतरीन लगेगा आपको।
डे लाइट हो, लो लाइट हो, हर सिचुएशन में अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करने का काम आता है। जूम करेंगे तो 64 मेगापिक्सल कैमरा में डिटेलिंग में आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। मैक्रो शॉट भी काफ़ी इंप्रेसिव है और डेप्थ सेंसर भी इसका ज़रूर पसंद आएगा आपको, क्योंकि पोर्ट्रेट जो है काफ़ी अच्छे से कटआउट और एज डिटेक्शन ये करता है। इस साथ साथ फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 32 मेगापिक्सल शूटर है, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। कलर्स काफ़ी नेचुरल है और उभर के भी आ रहे हैं, इसलिए सेल्फी लवर्स के लिए ये फोन काफ़ी खास कहा जाएगा। अब कैमरास के बाद बारी आती है सॉफ्टवेयर की। तो आपको बता दूं कि फ़ोन में आपको हमेशा की तरह नहीं, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि एंड्रॉयड 10 मिलेगा, तो वही एंड्रॉयड 10 मिल रहा है आपको। और यहाँ पे वन UI को वर्जन 2.1 दिया गया है। और वैसे भी आप जानते हैं कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी हद तक ब्लोटवेयर फ्री हो गया है। कुल यही एप्लीकेशन इसके अंदर मिलती हैं आपको। एक दो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, स्नैपचैट, डेली हंट, कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम वीडियो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। बाकी ये सब सैमसंग की छोटी मोटी ऐप्स मिल जाएंगी, कुछ ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं है। और फीचर वाइज तो आपको पता ही, सैमसंग की M सीरीज़ के कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर आपको सैमसंग फ़ोन में मिल जाते हैं, और वो सभी फीचर्स कंपनी ने इसमें भी मुहैया करवा के दिए हैं। So this is what the box of the Samsung Galaxy M51 looks like. You can see the front of the device right here. It does not have any specification mentioned on the box. So let's go ahead, unbox the device and take our first look at it. So this is the Samsung Galaxy M51. Let's quickly power it on, keep it aside, and let's take a look at the other contents in the box. So first, you have this 25-watt charger that comes out of the box, and a USB Type-C to USB Type-C cable. Let's keep the charger and the cable aside and take a closer look at the Galaxy M51. While I'm setting it up, I will take you through the specifications of the device. So right at the front, you've got a big 6.7-inch AMOLED display. It has full HD plus resolution, and this is the Infinity O display, which means that it's got a hole punch at the center of the display towards the top. And it has a side-mounted fingerprint scanner. The volume buttons are right above it. You can see it's not very thick as I was expecting it to be. It is definitely manageable. It does not feel very bulky either. Now this Galaxy M51 tips the scale at 213 grams, and there is Corning Gorilla Glass 3 on the front for protection. Let's set the device up. While it is setting up, let's take a look at the ports at the top and the bottom of the smartphone. So at the bottom, you've got the 3.5mm headphone jack, the USB Type-C port, and the bottom firing speaker. Whereas at the top, you've only got the secondary microphone. There's no other ports at the top. Now Galaxy M51 does recommend a few apps to install. I'm going to uncheck it. You can also log into a Samsung account. I'm going to skip that. Now, in terms of the hardware that is powering this Galaxy M51 is the processor, and it is a Qualcomm Snapdragon 730G SoC. The battery capacity is big, so you have a 7000 mAh battery, and you get a 25-watt charger in the box, which I think should help it charge quickly. So at the back, you've got a quad camera setup with a 64 megapixel primary camera, a 12 megapixel ultra wide angle camera, a 5 megapixel depth sensor, and a 5 megapixel macro camera. And you've got the black color variant for this device, and it has a very glossy finish, and as you can see, it does tend to pick up smudges rather easily. And then at the front here, you've got a 32 megapixel selfie shooter. Now let's take a look at the SIM configuration. So as you can see, it's got dual SIM configuration